UAE, Japan, and the other countries. Thank you to all of you for taking these long journeys, being a part of the Invest Rajasthan Summit, showing your confidence and your interest in the state of Rajasthan. Thank you for that. Requesting our esteemed guest to kindly be seated, please. And may I request our representatives to please guide them. हमारे सभी वरिष्ठ और विशिष्ट अतिथिगण व राजस्थान सरकार के माननीय मंत्रीगण, अधिकारीगण, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में। हमारे कैप्टन्स एंड लीडर्स ऑफ द इंडस्ट्री जो हमारे साथ हैं, उनका भी विशेष स्वागत, अभिनंदन। As I request all our esteemed guests and distinguished dignitaries to kindly take your seats, may I request the protocol officers with them to kindly move towards the auditorium, to be kindly taking your seats there. सभी protocol officers जो हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण और अतिथिगण के साथ हैं, उनसे निवेदन है कि प्लीज़ आप ऑडिटोरियम में जाकर अपना स्थान ग्रहण करें। It's an immense honor, ladies and gentlemen, for us that we have all of you joining us in the Invest Rajasthan Summit 2022. That itself is an expression of your commitment and being with the government of Rajasthan in their efforts towards promoting the socio-economic growth, the prosperity of Rajasthan. All of you are here with us as partners in success towards the growth of Rajasthan. Thanking you all for your participation and requesting you to kindly be seated at the earliest possible.
As our guests have joined, would like to once again reiterate that this entire event is being widely covered by the print and the electronic media. We have people watching us in various states of the country and also across the globe. Also being widely covered on the social media, on various social media handles. So you're requested to kindly tag us on hashtag IR2022 or on hashtag Invest Rajasthan.
you to be seated. No one should be standing in the hall. People who are on duty are requested to be standing on the sides. The rest requesting you to kindly take your seats. And ladies and gentlemen, we are really delighted to have the presence of a galaxy of distinguished guests joining us today, the captains and leaders of the industry, and then people from different walks of life who have contributed to the progress of Rajasthan. I would now like to take this opportunity of inviting them to please grace the dais as their names are called upon in the alphabetical order. Please join me, ladies and gentlemen, as I invite on the dais His Excellency Dr. Ahmed Al-Bana, the Honorable Ambassador of UAE to India. Inviting now our leading industrialist on the dais, Mr. Ajay S. Shriram, the Chairman and Senior Managing Director, DCM Shriram Limited. Mr. Anil Agarwal, the Founder and Chairman, Vedanta Resources Limited. May I invite Dr. Anish Shah, the Managing Director and CEO, Mahindra & Mahindra Limited. If I can just request our representatives to please guide the dignitaries on the dais, please. Ladies and gentlemen, very distinguished guests joining us today. It's an honor for us if, with a round of applause, we can extend our greetings to them. Dr. Anisha, the Managing Director and CEO, Mahindra & Mahindra Limited. Mr. Ashok Patni, the Chairman, Wonder Cements and RK Marbles. Inviting now Mr. B. Santanam, the CEO, Asia Pacific and India Region, and Chairman, Saint Gobain, India. Inviting Mr. B. Thiagarajan, the Managing Director, Blue Star India Limited. Mr. C.K. Birla, the Chairman, C.K. Birla Group. Mr. Chandrajit Banerjee, the Director General, CII. Mr. Gaurav Rungta, the Managing Director, Man Structurals Private Limited. Mr. Gautam Adani, the Founder and Chairman of Adani Group. Mr. H.M. Bangar, the Managing Director, Shree Cement Limited. Mr. Kamal Bali, the President and Managing Director, Volvo Group India Private Limited. Dr. Praveer Sinha, the Managing Director and CEO, Tata Power Company Limited. Inviting on the dais now Mr. Puneet Chatwal, the Managing Director and CEO, the Indian Hotels Company Limited. Mr. Salil Singhal, the Chairman Emeritus, PI Industries Limited. Now inviting on the dais Mr. Sanjeev Puri, the Chairman and Managing Director, ITC Limited. Mr. Sudhir Mehta, the Chairman, Torrent Group. Inviting on the dais now Mr. Suket Singhal, the Managing Director and Group CEO, Secure Meters Limited. Our next eminent dignitary on the dais, Mr. Sunil Mathur, the Managing Director and CEO, Siemens Limited. Mr. Suresh K. Podar, the Chairman and Managing Director, Mayur Unicoaters Limited. And inviting Mrs. Vaishali Nigam Sinha, the co-founder, Renew Power, and founder chairperson, Renew Foundation.
And now, ladies and gentlemen, inviting on the dais our highly esteemed guest, Honorable Justice R.M. Lodha, retired Chief Justice, Supreme Court of India. Mr. K.C. Malu, the Chairman, Veena Music Private Limited. And Mr. Sheen Kaf Nizam, Urdu poet and literary scholar. And now I would like to take this opportunity of inviting our distinguished government dignitaries, our policy makers and decision makers to take center stage. आप सभी की तालियों के बीच मंच पर स्वागत करते हैं श्री कुलदीप रांका जी का, माननीय मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और अध्यक्ष रीको लिमिटेड, श्रीमती वीनू गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य, राजस्थान सरकार, श्रीमती उषा शर्मा जी, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, डॉक्टर अरविंद मायाराम, माननीय मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार। मंच पर आमंत्रित हैं श्री राजीव अरोड़ा जी, अध्यक्ष, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, हमारी माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, श्रीमती शकुंतला रावत जी, और डॉक्टर C.P. जोशी, माननीय स्पीकर, राजस्थान विधानसभा। हमारे सभी वरिष्ठ और विशिष्ट अतिथिगण, मंत्रीगण, अधिकारीगण का मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मंच पर हमारे साथ देवी सज्जनों आप डॉक्टर C.P. जोशी जी, माननीय स्पीकर, राजस्थान विधानसभा, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये 4 जनों का वापस से अनाउंस देवी सज्जनों, आप सभी की करतल ध्वनि के साथ
अति सम्मानपूर्वक, उत्साहपूर्वक अब स्वागत करते हैं मंच पर हमारे मुख्य अतिथि, जन जन के नायक, विकास पुरुष, राजस्थान के यशस्वी और अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का। राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले, दृढ़ निश्चय वाले, संकल्प वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर स्वागत। साथ साथ उनके साथ हैं श्रीमती शकुंतला रावत जी, हमारी माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी का अभिवादन करते हुए मंच पर। And ladies and gentlemen, good greetings to all of you also. Namaskar, Khamagani. आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ in the land of Rajas, Rajasthan, which is today one of the emerging business hub in the country. And I welcome you all to the forum, the Invest Rajasthan Summit 2022, a forum where the commitment meets delivery. देवी सज्जनों, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। ये समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। यहाँ पर मेहनतकश लोग हैं। एक पूर्ण विकसित नीतिगत ढांचा है जो कि व्यापार के लिए और निवेश के लिए एक बहुत ही अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। और इन्वेस्ट राजस्थान समिट हमारे कद्दावर नेता, दृढ़ संकल्प वाले, ठोस निर्णय लेने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का राजस्थान को एक संपन्न और समावेशी राज्य के रूप में विकसित करने का उनका सपना, उनका संकल्प, उनकी प्रतिबद्धता, उनकी कमिटमेंट का प्रतीक है, उसकी अभिव्यक्ति है। And towards that, it is a clarion call to everyone to come and witness for yourself the growth, the progress, the promise of the state of Rajasthan, the opportunities which it has to offer to all of you. Take your own informed decisions and then be a part of the growth story of Rajasthan. तो देवी सज्जनों, इसी सोच और इसी मंशा के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का विधिवत उद्घाटन करते हैं। ज्ञान और ज्योति के प्रतीक इस दीप को प्रज्वलित कर अपनी भारतीय परंपरा और अटूट विश्वास के साथ। और इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी को कि वे अपने कर कमलों द्वारा इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का दीप प्रज्वलित कर उसका उद्घाटन करें। साथ साथ निवेदन है डॉक्टर सीपी जोशी जी से, ऑनरेबल स्पीकर विधानसभा, हमारी ऑनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर श्रीमती शकुंतला रावत जी, डायरेक्टर जनरल CII श्री चंद्रजीत बैनर्जी, चीफ सेक्रेटरी राजस्थान श्रीमती उषा शर्मा मैम, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स श्रीमती वीनू गुप्ता। सभी से निवेदन है कि आप इस शुभ परंपरा में शामिल हों और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा अब हमारे इस फोरम का इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का श्री गणेश, मैं निवेदन करना चाहूँगी श्री गौतम अदानी जी से भी, और मंचासीन हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी से निवेदन है कि आप भी प्लीज़ हमारी भारतीय परंपरा के साथ हम और ईश्वर की स्तुति और वंदना के साथ, सभी की शुभकामनाओं के साथ, सभी के लिए मंगल कामना के साथ इन्वेस्ट राजस्थान समिट का हम विधिवत उद्घाटन करते हैं। कहते हैं मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, और इस दीप प्रज्वलन यही उसी का प्रतीक है। सभी मिलकर इस दीप को प्रज्वलित करते हुए, सभी का सहयोग की कामना करते हुए, हम सब अपने प्रदेश की, राजस्थान की उन्नति प्रगति में सहयोग दें, बढ़ चढ़ कर आगे आएँ, इसको और आगे लेके जाएं।
और यही मनोकामना, यही इच्छा हमारी इस दीप प्रज्वलन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, और मंचासीन सभी का धन्यवाद। हमारी इस भारतीय परंपरा के साथ हमारे इन्वेस्ट राजस्थान समिट का विधिवत उद्घाटन श्री गणेश। देवी सज्जनों, गौरवशाली अतीत वाला राजस्थान आज भविष्य के द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह एक नया राजस्थान है जिसकी नई आशाएं हैं, नई उम्मीदें हैं, नए हौसले हैं, नए इरादे हैं, नए सपने हैं और नया दृष्टिकोण है। इस नवीनीकरण की तरफ, अपने विकास गाथा में सम्मिलित होने की तरफ हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया और आप हमारे देश पधारे। तो सभी का धन्यवाद करने के लिए, सभी को आभार व्यक्त करने के लिए, स्वागत करने के लिए अब मैं निवेदन करती हूँ हमारी माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती शकुंतला रावत जी को। उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, क्योंकि आज का दिन शुक्रवार वैभव लक्ष्मी का वार है और मंच पर और मेरे सामने सभी बैठे हैं जिनके यहाँ लक्ष्मी का निवास होता है और लक्ष्मी वितरित भी होती है वहाँ से। आज के इन्वेस्ट राजस्थान समिट में मंच पर उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी, सम्माननीय मंच पर उपस्थित गौतम अडानी जी, अनिल अग्रवाल जी, सुधीर मेहता जी, CK बिड़ला जी, अजय श्रीराम जी, बी शांतनाम जी, अनीश जी शाह, परवीर सिन्हा, सम्माननीय राजीव जी, उषा जी, कुलदीप जी, वीनू जी, सभी सम्मानित मंच पर उपस्थित प्रबुद्धजन, जो कई दिनों से हमारा समिट कोरोना और ओमिक्रॉन के कारण टल रहा था और आज के इस प्रोग्राम में CII के पूर्ण सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सभी यहाँ पर उपस्थित भी हैं। ये राजस्थान धरती धोरारी है जो कि मशहूर कवि जिन्होंने एक कविता लिखी, कन्हैया लाल जी सेठिया जी ने हमारे राजस्थान की माटी का, वीरों का, देवों का, संतों का वर्णन किया कि धरती धोरारी आ तो सुरंगा ने शरमावे ई पर देव रमन ने आवे, ईरो जस नर नारी गावे धरती धोरारी। लुड़ लुड़ बाजरिया लहरावे, मक्की लाल झालो देर बुलावे, कुदरत दोनों हाथ लुटावे धरती धोरारी। तो कुदरत धरती हमारी यहाँ सोना निपजने वाली राजस्थान की धरा पर सभी मंचासीन प्रबुद्धजन का और मेरे सामने सभी उपस्थित इन्वेस्टर्स, आए हुए अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इस सम्मेलन में आयोजित हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का सपना था कि मेरे राजस्थान
इन्वेस्ट में अव्वल नंबर पर रहे। मेरे राजस्थान के युवा युवतियां, महिला युवकों को रोजगार मिले। इस सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के सतत आर्थिक विकास, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से किया जा रहा है। यह सम्मेलन राज्य और देश के पारंपरिक एवं उभर रहे सेक्टर्स पर केंद्रित है। यहाँ उपस्थित कई महानुभावों ने अपने क्षेत्र में जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, वो देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपना भारत देश का नाम रोशन किया है। हम भाग्यशाली हैं कि आज वो यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। राजस्थान की धरा पर राजस्थान के प्रतिभावान उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। उद्योग विकास को बढ़ावा देने के लिए, बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटी सही मगर निरंतर प्रयास करना बहुत ही जरूरी है। मैं आशा करती हूँ राजस्थान जिस प्रकार से अभी तक जो सहयोग इन्वेस्टर्स का मिला है, वो आगे भी मिलता रहेगा। हमारा राजस्थान सौंदर्य की दृष्टि से, शुद्ध वातावरण की दृष्टि से, सांस्कृतिक धरोहर वाले इस प्रदेश में समस्त प्रकार के संसाधनों की बाहुल्यता है। क्षेत्रफल देश में एक विशालतम राज्य होने के साथ साथ पर्याप्त बिजली, पानी, सड़कें, आवश्यक आधारभूत सुविधाएं, विभिन्न प्रकार के खनिजों, कृषि उत्पादनों में विविधता में संपन्नता राजस्थान में पाई जाती है। डीएमआईसी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा हमारे राजस्थान से गुजरता है, जो कि एक भविष्य में विकास की धुरी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का 25% भाग राज्य में है। देश के 40% बड़े बाजारों तक हमारे राज्य की पहुंच है। प्रकृति की राजस्थान पर असीम कृपा है। खनिज संपदा राजस्थान देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में जिंक, लेड का एकमात्र उत्पादक है। सेरेमिक उद्योग के लिए आवश्यक अधिकतर खनिज यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि समावेशी संतुलित औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान की औद्योगिक विकास नीति लागू की गई है। 2019 योजना 2026 तक जो चलेगी, निर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में 30 ट्रस्ट सेक्टर हेतु आकर्षण परिलाभ कस्टमाइज्ड पैकेज का विशेष प्रावधान किया गया है, जिनमें कृषि आधारित उद्योगों के लिए पृथक से कृषि संस्करण उद्योग नीति, सौर ऊर्जा नीति, विंड हाइब्रिड ऊर्जा नीति, पर्यटन नीति, एथेनॉल नीति एवं एमएसएमई नीति प्रमुख रूप से है राजस्थान में विद्यमान। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति जारी की गई है, जो पहले सिर्फ 2 राज्यों में थी, असम में और ओडिशा में, जो हमारे अब राजस्थान में मुख्यमंत्री महोदय ने लागू की है, जिससे हथकरघा और हस्तशिल्प को पुनर्जीवित करने का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की जो योजनाएं हैं, चाहे रिप्स की हो, एमएसएमई हो, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना हो, जिसमें 25 लाख तक का कोई इन्वेस्ट करेगा तो 8% ब्याज अनुदान राशि सरकार की तरफ से देय होगी। 5 करोड़ तक का करेगा तो 6% अनुदान राशि देय होगी। 10 करोड़ पर 5% अनुदान राशि देय होगी। स्टाम्प ड्यूटी 0% है, भूमि कर 0% है, विद्युत कर 0% है। 5 वर्षों तक अगर कोई उद्यमी अपना उद्योग धंधा स्थापित करता है तो उसको किसी तरीके की कोई विभागीय जांच परख के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। SC, ST महिलाओं के लिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग योजनाएं राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाई हैं। और उससे भी बड़ा कि जो PF उद्यमी अपने कर्मचारियों को देता है, अधिकारियों को देता है, उसमें भी सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने 50% देने का योजना बनाई है, देने का फंड का प्रोविजन किया है राजस्थान की सरकार ने। इससे उद्यमी को अपना उद्योग धंधा स्थापित करने में
किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। और होटल को टूरिज्म में एक घोषणा करना, एक योजना बनाना ही नहीं, बल्कि उसे लागू कर दिया गया इंडस्ट्रीज की तरह, उसे भी सभी चीजों में छूट लागू कर दी गई है। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है राजस्थान का। खादी हो, चाहे रूड़ा हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, हर क्षेत्र में राजस्थान की योजनाओं से आगे बढ़कर के कोई स्टेट नहीं है। और सबसे बड़ी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की जो योजनाएं हैं, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। मैं इसलिए ये योजनाएं बताना चाहती हूँ कि इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्टर्स का स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से आप कोई प्रश्न लाए तो उसका उत्तर भी साथ में लेकर के आए, जिससे मुख्यमंत्री महोदय ने ये कह रखा है कि हमारी सरकार की तरफ से जो इन्वेस्टर्स मांगेगा वो हम उसकी मांग पूरी करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारी मांग है कि हमारे राजस्थान के युवा और युवतियों को रोजगार मिले, बस इसी टारगेट को प्राप्त होना चाहिए। थोड़ा मैं सरकार की योजना इसलिए बताना चाह रही हूँ कि जो भी इन्वेस्टर्स बाहर से आएगा, दूसरे राज्यों से आएगा, हमारे यहाँ राजस्थान की किसान मित्र योजना हो, 1000 रुपए बिजली के बिल कम करना, लाखों किसानों का जीरो बिल आ रहा है, घरेलू बिजली पर छूट हो, निरोगी राजस्थान हो, चिरंजीवी में प्रबंधन हो, जिसमें कि 10 लाख का और 10 लाख से ऊपर तक का भी ट्रीटमेंट फ्री है। उससे भी बड़ी योजना है कि कोई भी अकस्मात किसी की दुर्घटना हो जाती है, मात्र 850 रुपए में कोई भी व्यक्ति करा सकता है अपना इंश्योरेंस। चिरंजीवी योजना में कोई शर्त नहीं है उसकी, तो उसको तुरंत प्रभाव से 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। कर्मचारियों के लिए RGSH योजना, जिसमें कि सारा खर्चा उनका दवाओं का सरकार उठाती है। ओल्ड पेंशन हो, फ्री दवा हो, उड़ान योजना हो, छात्रवृत्ति हो, बालिकाओं को शिक्षा हो, और महिला उद्यमियों के लिए विशेष योजना हर क्षेत्र में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने दी है वो बहुत ही सराहनीय है। आप यहाँ पधारे राजस्थान की इस धोरारी भूमि पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप सभी यहाँ पर आए तो एक राजस्थान नई उपलब्धि प्राप्त करेगा। आप सुस्त नहीं रहे, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का दिल बहुत बड़ा है। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आप कोई भी योजना लेकर के आएंगे तो हम उसमें, हमारी सरकार आपकी मदद करने को तैयार है। धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आपके उद्बोधन के लिए। और देवी सज्जनों, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, राजस्थान सरकार पूरी तरह से कमिटेड है, प्रतिबद्ध है महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ, सभी वर्गों के सशक्तिकरण की तरफ और सभी सेक्टर्स को अनेक ऊंचाइयों तक ले जाने की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। In fact, as a run-up to this summit, there were many meetings, interactions, discussions, deliberations which were held in the last few months, having a discussion with the various industry people, various MOUs were signed, proposals were discussed. In fact, a lot of action on the ground, which actually took us and has taken us to this D-Day. So we take you now through this very accomplishing journey. And for the same, I would like to request and invite Shrimati Veenu Gupta, Additional Chief Secretary, Industries and Commerce, Government of Rajasthan, for her presentation. Honorable Chief Minister, distinguished guests on the dais, ladies and gentlemen, it is my privilege to welcome you all to Rajasthan, the land of opportunities, the land of myriad advantages. Rich in natural resources, Rajasthan produces 81 major and minor minerals. It is the sole producer of zinc and lead in the country. With an excellent rail and highway network and 39% of dedicated freight corridor passing through the state, it provides access to 40% of India's market. There are nearly 400 well-developed industrial areas dotted across the state, and 25 of them, I can proudly say, are amongst India's top 70 industrial parks. With 2 skill universities and premier institutions like IIT, IIM, and NIFT,
the state is in a position to cater to skill requirements of all kinds of industries. Peaceful labor relations and good law and order situation is Rajasthan's hallmark. As a result of these advantages, the performance across sectors is unmatched. We have 13% of India's cement production share. We are number one in production of crops like mustard and bajra, and also medicinal crops like isabgol and ashwagandha. With 17% share, we are number one in national mineral production. At nearly 20,000 megawatt, we are number one in installed capacity of renewable energy. We have 40% share in non-ferrous metals. Blessed with wide-ranging tourism products from heritage to wildlife, we have 11% share in India's total tourist arrivals. As a result of these advantages, we are home to leading companies. 200 of the Fortune India 500 companies are present in Rajasthan. Honda, Hero, Kane, Vedanta, Adani, just to name a few. In the post-COVID era, the global supply chain is shifting from China. This shift presents huge opportunities for us in various sectors like ESDM, automobiles, electric vehicles, etc. To harness this potential, the state is working on several fronts, including policy interventions. I am happy to share that the Honorable Chief Minister will be launching a new investment promotion scheme today, which will be unmatched in its approach and offerings. The Invest Rajasthan Summit that you are attending today is a culmination of a journey started under the visionary leadership of Honorable Chief Minister about a year ago. We undertook an extensive outreach program, meeting various investors in various cities nationally and internationally. More than 4,000 MOUs and LOIs have been signed with an investment worth 11 lakh crores and employment potential of nearly 10 lakhs. The bulk of proposed investment is in the manufacturing sector, and within the manufacturing sector, sectors like energy, cement, minerals have attracted substantial investment. There has been high interest in sunrise sectors like electric vehicle, green hydrogen, and ethanol. In electric vehicles, we have commitments from companies like Hero Electric and Okaya. In renewables, all the major players, Adani, Renew, Acme, have committed. About half a dozen MOUs have been signed for ethanol. In ceramic and glass, while Saint-Gobain continues to be our pride, we now also have Asahi with us. Torrent, Vedanta, Hindustan Zinc are some of the major players in chemicals and petrochemicals. The services sector has also attracted substantial investment of around 55,000 crores with an employment potential of more than 2 lakhs. Several MOUs have been signed in the medical and IT sector. Several commitments for setting up of resorts and hotels have been made, and also a film city which will be the first of its kind in the state. Investments in logistics sector will strengthen our business ecosystem. Several MOUs have been signed for setting up of warehouses and other logistic facilities. In the education sector, we have seen commitments for setting up of universities and skill centers. Having signed these MOUs, we have worked diligently to bring them to reality. As a result, 40% of them are already under various stages of implementation. You will witness groundbreaking and inauguration of many projects today. The glimpse of delivered commitments that I have shared with you is a part of a bigger picture, a part of our Chief Minister's overarching vision of shared prosperity. I take this opportunity to present before this august audience a snapshot of this bigger picture
of how Rajasthan is delivering on its commitment of a promising future for every section of the society. This is Rajasthan, a state committed to delivering to its people the promise of economic success, well-being, and shared prosperity. Setting a benchmark for the entire country, Rajasthan's Mukhya Mantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana provides health cover for up to 10 lakh rupees to every family for cashless IPD treatment in hundreds of hospitals across the state. Every Chiranjeevi family has also been provided an accident cover of 5 lakh rupees. All consultations and services, pathological tests and medicines are now provided free of cost in all state medical institutions. To ready our children for the future and make them competitive at the global level, more than 2,000 English medium schools are being opened. The number of colleges opened in the last 60 years has been doubled within just the last 3 years. The state is also setting up world-class institutions of advanced learning to train its youth on the latest cutting-edge technologies. The state's Indira Gandhi Shahri Rozgar Guarantee Yojana provides families residing in urban areas with 100 days of employment per year. Giving power right into the hands of the people, the Mukhya Mantri Digital Seva Yojana will provide a smartphone with internet connectivity to the lady head of the family to ensure universal coverage. Often mistaken as a desert, Rajasthan is the leading producer of a wide variety of crops, with the potential for value addition and exports. With over 80 lakh families dependent on agriculture, the farmer is still the pivot of our economy. This year, for the first time, the state presented a separate agriculture budget with 11 missions to ensure even more effective implementation of agriculture and related schemes worth 5,000 crore rupees. The state's tourism sector that welcomes millions of travelers from across the world has been accorded real industry status, giving an unprecedented fillip to tourism and hospitality units. To further augment connectivity in the largest state, 5,800 kilometers of new roads have been constructed in the last 3 years, making it one of the finest road networks in the country. And now, with a fully operational, high-speed, double-stack, western dedicated freight corridor, Rajasthan forms a seamless conduit between the markets of the western and northern states and ports on the western coast. Power is abundant and going greener, with Rajasthan now having the country's highest installed solar capacity and also the world's largest operational solar park. India's biggest industrial land bank, with a network of over 390 well-developed industrial areas and sectorial theme parks, welcomes investors to set up enterprises in every part of the state. Rajasthan also offers the most compelling package of incentives and concessions for enterprises across sectors. The state is also India's second largest producer of minerals and natural gas,
and the largest onshore producer of crude oil. The upcoming 9 million metric ton refinery cum petrochemical complex at Pachpadra in Barmer will be the new epicenter of economic activity in the country. Rajasthan offers competitive advantages and a thriving ecosystem in many sectors, translating into opportunity for profitable investment. Add to these advantages and opportunities the relaxed and exciting lifestyle offered by the cities of Rajasthan, replete with all modern facilities. And what you have is the most promising investment destination. This is a new Rajasthan. A state committed to greater individual, social and economic well-being. A state delivering the promise of a good life and a good future to its people. A state ready to welcome you with open arms. So as you saw and heard, ladies and gentlemen, this is a state which stands committed to its people. And in fact, this is a state, a culture-soaked state with so much of grace and beauty. It has embraced modernity, transformation and technology to be a future-ready state. May I now invite Director General CII, Mr. Chandrajit Banerjee, for his special remarks. Honorable Chief Minister Shri Ashok Gehlot Ji, Honorable Ministers from Rajasthan, Honorable Speaker, senior officials of the government, Excellencies, distinguished industry leaders, ladies and gentlemen. May I first start by congratulating and thanking the Honorable Chief Minister of Rajasthan for this outstanding Investment Rajasthan Summit. Sir, your hospitality, the content of the event and the quality of this event are just exemplary, and we appreciate the huge partnership that you have extended to the industry. Sir, the tremendous progress that we have seen over the last 24 hours in the film that was just shown, in the presentation that was made by the Honorable Minister and the officials has been just outstanding. And we have such large participation from the Indian industry from across the country, from each corner of the country, present here today to listen to you and participate in the development progress of your state. Sir, yesterday you addressed the National Council of Cii, which had 80-odd members, senior industrialists, which is the top body of the industry organization. And there also, you covered and you answered every question that was raised in the council meeting with so much of encouragement for the Indian industry to participate in your state. So we thank you for this partnership. We applaud your leadership and we pledge to participate in your state continuously. So today we have people from the different sectors, manufacturing to tourism, to agriculture, to defense, from auto sector, banking, and many more who are here from different walks of the industry. Honorable Chief Minister, you have made some remarkable progress, and over the last, again, I said, since we have come to your state, we have heard some great stories. Some of the stories were mentioned by the Honorable Minister. Some of the other things that we have talked which are unique in the country, the MSME Facilitation Act, unique again, which requires no permission for new small and medium enterprises to be set up for 3 years. The one-stop shop for investments in Rajasthan has been an exemplary hit amongst the industrialists present here. And the industry status, which has been the first state to do that to the tourism sector, are definitely some areas that we will take to the other states as a learning from Rajasthan. Honorable Chief Minister, sir,
CII has been present in your state for the last 32 years, from 1990. Sir, we have been working proactively under your leadership on many areas of social sector development, skill development, investment generation, tourism, agriculture, employment generation, and we will continue to do so, sir. Sir, I'm happy also to state that when you inaugurated the CII NBC Model Career Center in Jaipur in 2019, just 2 years back, since the last 2 years, this career center has been able to offer job and employment to 21,000 youths of Rajasthan. And we are now upgrading this private employment exchange to a skill development center. Sir, you have also in your budget given the opportunity for CII to work with the Dalit India Chamber of Commerce, and the Honorable Minister also alluded to the opportunities of the less privileged, and we will be working closely with Dicky to bring up this incubation cum training center in your state, sir. We look forward to your working with you. There are many areas, one can go on and on, to where we see opportunities, be it in the field of energy, clean energy, and we have 10 centers of excellence on different fields of sustainability. Sir, we will see to it that we extend those 10 centers' expansion plan in Rajasthan, in your state. Sir, we will, through the large industry members of CII, see how the startup, again an area of your passion, how the startups could be connected with the large companies through their mentorship and also through business opportunities. Sir, we will also participate in your state's export strategy. Each and every district of your state has some phenomenal products, and we will see to it that we will work and assist your government, sir, in seeing to it that it gets that global connectivity and exports and your products are reached around the world. So we will continue to engage in your investment facilitation, policy in ports and social development. We have had a great journey of CII, working closely with your state government, sir, under your leadership, and we shall certainly continue this partnership under your kind leadership. Once again, sir, many congratulations and thank you for giving us this opportunity to showcase your state to the rest of the country and the world. Thank you. Thank you, sir. And ladies and gentlemen, as the Director General CII said, we have been today joined by very eminent personalities, guest speakers, the leading industrialists of the country. We now invite their views and forward thinking. And may I first request Dr. Praveer Sinha, the Managing Director and CEO, Tata Power Company Limited, to please address the august gathering. माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी, माननीय इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मिनिस्टर शकुंतला रावत जी, सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इंडस्ट्री लीडर्स, डिग्नेटरीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बहुत ही गर्व के दिन है कि राजस्थान सरकार ने इन्वेस्ट राजस्थान किया है, और मैं मुख्यमंत्री जी और सरकार को का अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने एक सही समय पे ये इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया, ये इन्वेस्ट राजस्थान किया है। देखने में आया है कि राजस्थान आज टॉप मोस्ट स्टेट है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, चाहे ये सोलर एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी, राजस्थान नंबर 1 है। और आगे चल के भी जिस तरह से पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, ये नंबर 1 रहेगा। आज करीब 20,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं राजस्थान में, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कुछ सालों में 50,000 और 1 लाख मेगावाट हो जाए। टाटा पावर राजस्थान में राजस्थान सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। हमने 5,000 मेगावाट का इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे, 2,000 ऑलरेडी ऑपरेशनल है और 3,000 मेगावाट डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। अगले 12 से 24 महीने में वो कंप्लीट हो जाएंगे, और हमारा प्लान है कि अगले 5 साल में हम इसको 10,000 मेगावाट कर दें। इसके साथ मुख्यमंत्री जी ने हमें ये भी बताया कि सिर्फ सोलर प्लांट और विंड प्लांट नहीं लगाना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग का भी करना है। तो हम यहाँ पे असेंबली यूनिट, फैब्रिकेशन यूनिट लगाने का भी कोशिश में है।
इसके साथ सिर्फ ये बड़े प्लांट्स ही नहीं है, टाटा पावर यहाँ इन्वॉल्व है रूफटॉप सोलर में, काफ़ी शहरों में और छोटे शहरों में भी रूफटॉप सोलर का काफ़ी पेनिट्रेशन हुआ है। इसके साथ सोलर पंप्स, राजस्थान में करीब 14 लाख पंप्स हैं, जिसमें से 70,000 सोलर पंप्स हैं, जिसमें से 20,000 टाटा पावर ने लगाया और उम्मीद करते हैं कि अगले कई सालों में ये नंबर बहुत बढ़ेगा। राजस्थान में सिर्फ हम रिन्यूएबल ही नहीं कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम बड़े सारे काम कर रहे हैं। ईवी चार्जिंग, जो एक नए तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट किया जाए, उस पे हम लोग ने काम किया है। 1000 होम चार्जर्स लग चुके हैं राजस्थान में और करीब 100 पब्लिक चार्जर्स लगे हैं, इंक्लूडिंग यहाँ से दिल्ली हाईवे तक का। अगले कई सालों में उम्मीद है कि हम इसको कम से कम 10,000 चार्जर्स लगाएंगे राजस्थान में, पब्लिक चार्जर्स, और कोई भी राजस्थान में यदि ट्रैवल करना चाहे एक शहर से दूसरे शहर, पब्लिक चार्जर्स उनको मिलेगा। राजस्थान में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बिजली सप्लाई का। हम लोग ने कुछ साल पहले अजमेर में डिस्ट्रीब्यूशन लिया, जो वहाँ लॉसेस थे करीब 22% के, आज वो 9% हो गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की है, हमें मौका मिलेगा और भी शहरों में अच्छी बिजली सप्लाई करने का, रिलायबल बिजली सप्लाई करने का, कस्टमर सर्विस देने का। और ये जो प्रयत्न रहेगा, ये एक भागीदारी के तरीके से रहता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होता है सरकार के साथ, ताकि हम बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ जो सिटीजन्स हैं राजस्थान के। ऑन CSR ऑल्सो हम लोग ने काम शुरू किया हुआ है। हमने 3 वोकेशनल सेंटर्स लगाए हुए हैं, जिसमें महिलाएं और युवक और युवतियों को काम मिलता है, चाहे वो कंप्यूटर ट्रेनिंग हो या अदर स्किल सेट्स हो। काफ़ी सारे ट्रेनिंग हम लोग वहाँ प्रोवाइड करते हैं। ये काफ़ी इंटीरियर एरियाज़ में है, लोहरकी में है, छायन में है, फलोदी में है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंक्रीज़ करेंगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा युवक और युवतियों को संगठित कर पाए, उनको काम सिखा पाए, और महिलाओं के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप को डेवलप करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि टाटा पावर की तरफ से हम आपके साथ पूरा योगदान करेंगे, हम आपके साथ भागीदार रहेंगे इस डेवलपमेंट प्रोसेस में, और जो नए राजस्थान को आप स्थापना कर रहे हैं उसमें हम आपके साथ हिस्सेदार रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजस्थान में जो आपके इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट्स है उसके बारे में हमें जानकारी देने का, साथ साथ आगे के जो आपके निवेश के प्लान्स हैं वो भी हमारे साथ साझा करने का। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अनीश शाह जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, all the dignitaries at the inaugural session, ladies and gentlemen, as a long-standing partner of Rajasthan, I am honored to address this esteemed gathering at Invest Rajasthan on behalf of the Mahindra Group. While the Mahindra Group is a leader globally in automotive and farm, we have expanded over the years into various industries: hospitality, financial services, IT, real estate, and many others. And every time we started a new business, Rajasthan and its people welcomed us, supported us, and made sure we were successful. Let me share our journey. 20 years ago, in 2002, we broke ground for a new tractor plant at Badru, near Jaipur. A few years later, we launched the Mahindra World City in Jaipur, which is the investment and international destination for global multinationals looking for a hassle-free entry into the Indian market.
The government of Rajasthan supported our investment by becoming a strategic partner. This project has operated as a hallmark of a successful public-private enterprise, employing 14,000 people directly and contributing 15,000 crores to Indian exports. Rajasthan's landscape, people, history, and culture are among the many facets of this vibrant state, which attracts tourists from around the world. And it is no different for our guests at Club Mahindra, which operates 5 resorts in this wonderful state. We can uniquely craft Rajasthani experiences for our guests and welcome them with the feeling of Padaro Mare Desh. And beyond that, our defense business has partnered with the government of Rajasthan to augment law enforcement capabilities by designing and operating a state-of-the-art Abhay Command Center for Rajasthan Police. Finally, I would add that Rajasthan plays a pivotal role in the Mahindra Group's sustainability ambitions. We have developed 4 large-scale solar projects in Rajasthan already and are actively pursuing various opportunities to do a lot more in renewable energy here. Our success in Rajasthan would not be possible without consistent support from the government, which has prioritized ease of doing business above all else. For the Mahindra Group, on every occasion, Rajasthan has committed and delivered. I thank you once again for your hospitality, acceptance, and support that you've accorded us over the years, and we look forward to continuing this partnership. Thank you. Thank you, sir, for your contribution and commitment to the state of Rajasthan. And now inviting Mr. V. Santhanam, the CEO, Asia Pacific and India region, and the chairman of St. Gobain, India, for his address. Honorable Chief Minister, Shri Ashok Gehlot Ji, distinguished guests, senior government officials, it's indeed a proud privilege for us to participate in this Invest Rajasthan. And I'm going to say a few words about our experience in Rajasthan. A decade plus ago, we hadn't even thought about Rajasthan as a potential place for investment. I do fondly recall that the then Mr. Ranka, he was in charge of the industrial promotion, he had come and made a special visit to our place in Chennai, and he said that, why are you not considering Rajasthan? And Honorable Chief Minister, you'll be happy to know that you laid the foundation for our first investment, where we invested over 1,200 crores. And that's really a flourishing and contributes to over 10% of India's glass production today, the float glass production. And then the industry flourished, and 15 months ago, right in the middle of the Delta pandemic, our Honorable Chief Minister convened a meeting with us. I do fondly recall, he said that, why are you not considering investment once again? Because at that point in time, the whole world was in a gloomy period. There was pandemic. I said that we'll give everything that you need in order for you to make the investment. And that particular commitment and the fact that historically Rajasthan has always delivered whatever it has promised made us reinvest again in Rajasthan. We signed our second MOU. And you'll be very happy to know that that 1,200 crore investment, which is just conceived in 15 months ago, will be fructified in the next 9 months. So by March, that particular new investment of 1,200 crores will be commissioned. So that's really the power of what both Saint-Gobain and Rajasthan coming together. There is very solid mutual commitment. There is solid mutual delivery. When I think about Rajasthan, there are 5 P's that come to my mind. Firstly, the people of Rajasthan. I think extraordinarily humble, extraordinarily
relationship oriented, but at the same time very highly productive. You'll be happy to know that the plant in Bhiwadi that we have is amongst the top 3 plants in the world in terms of productivity, energy efficiency, sustainability, and output. And we have over 30 such facilities all over, from China to Brazil to Europe to America. So that is really the power of the people of Rajasthan, and they've been extremely productive and enormous value addition to not just the country, but also to our companies. The second P that comes to me is really the progressive and proactive machinery, the government machinery under the Honorable Chief Minister as well as the bureaucrats. I think they have been absolutely fantastic right through. And I do recall during the pandemic, we can't stop our lines, and they went extraordinary effort to make sure that we followed all the right protocols, we worked with them and made sure that our lines are running very well. And that really made a huge difference when we look at our investment. Third is the policies. The policies have been very, very flexible and very highly tailor-made to each and every industry's unique needs. And I think that's really something which is very special about Rajasthan. We've worked with the Chief Secretary, we've worked with the Finance Secretary, the Industry Secretary, and the RICO Chairman. All of them work together with collaborative spirit to make sure they deliver whatever they committed. And that's really something which I can say. And I can tell you today, and that almost every single financial benefits that we have to receive, on date, Rajasthan has delivered. I can't think of any other state in India which delivers it time after time, quarter. So when you are really investing it, so it's a progressive, and the whole thing is a partnership orientation. Whether you are in difficulty like during the pandemic or whether things are going very well, I think there is a partnership spirit. That's the fourth P. But when you all have all of this, the businesses are in the pink of health. And I'm not surprised that this is a state and therefore the pink of health. So when I really look at this, the people, the progressive government, the proactive government, the policies, and the flexibility, and the fact that you can prosper in this state, I'm not very surprised. Companies like us will continue to stay invested in the state. Really look forward to working with you and your team, sir. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने का, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर द ट्रस्ट एंड द कॉन्फिडेंस इन द स्टेट मशीनरी एंड द लीडरशिप. और अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अजय एच श्रीराम जी को, चेयरमैन एंड सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर DCM श्रीराम लिमिटेड. Honorable Chief Minister of Rajasthan, Shri Ashok Gehlot ji, Honorable Minister for Industries and Commerce, Srimati Shakuntala Rawat ji, Honorable Ministers and dignitaries on the dais, Chief Secretary of Rajasthan, Additional Chief Secretaries, senior government officials, my eminent industry colleagues on the dais, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to thank our Chief Minister, Shri Ashok Gehlot ji, and the state government for inviting me to this inaugural event. It's a privilege and honor to be present in Jaipur today. If I may strike a personal note, coming to Jaipur for me and for DCM Shriram Limited is like homecoming. Our business has deep roots in the state of Rajasthan, and over the years, it has grown to become a big tree. We established our multi-product manufacturing facility in Kota in 1963. And since then, it has grown manyfold. This has been possible because of the favorable policies and the industrial climate in the state. The entire ecosystem has encouraged ancillarization and other services to come up, which are essential and an integral part for large industries to flourish. Our numbers speak for the growth trajectory. The production of various items have gone up 10 to 15 times across categories, reflecting significant investment towards capacity enhancement
and job creation. As a result, our Kota complex is now an integrated facility where many of our byproducts are raw material for further value addition. By following a circular economy route for better sustainability, we have implemented various water conservation measures. In fact, we have made at our factory complex a water harvesting pond for collecting 4.5 lakh cubic meters of water, which is used in our industrial process. Simultaneously, in the areas and villages around us, we have already made 9 water harvesting water bodies, 4 more are under implementation, and we will continue this exercise going forward. We do believe that water is a scarce resource. It requires management, it requires value, and our objective is to help in water conservation across the board. The hydrogen produced in a chlor-alkali plant is used as fuel, thereby reducing greenhouse gas emissions. We have gradually increased the use of renewable biomass to 15% of feedstock for our power generation, and the installation of solar panels are in an advanced stage of evaluation. Essentially, for all our investment decisions, environment, safety, and governance are an integral part. There are several expansion plans in the pipeline, ranging from advanced agri-input manufacturing to our branded Fenesta UPVC windows and doors business, as the state provides the right mahal for continuously expanding and growing. The introduction of a single window system as part of the ongoing business reforms is most welcome. Setting up of ITIs with industry partnership have provided adequate skilled manpower. Our company too has partnered in setting up ITIs. People of Rajasthan have always been known for their hospitable nature, willingness to learn, and an honest disposition, all contributing to the conducive business environment. All of us are aware that for raw materials and access to markets, efficient logistics are a key requirement. Even though Rajasthan is a landlocked state, excellent highways provide easy access to the ports of Gujarat and Maharashtra. I would like to mention that there are 2 significant projects that will be game changers for the state of Rajasthan and will improve the logistics tremendously. The first is the 1,500-kilometer Western Freight Corridor that links NCR to the ports of Gujarat and Maharashtra. Of this, 550 kilometers passes through Rajasthan, with key towns and industrial hubs on its route. The second is the Delhi-Mumbai Expressway, which is due for inauguration in early 2023. Of its 1,200 kilometers, 350 kilometers passes through Rajasthan. With these 2 mega infrastructure projects, movement to states such as Delhi, Haryana, UP, Madhya Pradesh, Maharashtra, and Gujarat can be done at a sustainably reduced cost and time. This will provide Rajasthan with a competitive edge. Collectively, we do need to take steps for industry to grow further and faster and to be globally competitive. Typically, transaction costs tend to be on the higher side across the board, and it's all over India. Industry and government should now jointly benchmark and collaborate to accomplish global best practices. Sirs, I'd like to mention that on behalf of CII, we would be honored to work with your state government to study these aspects and see how we can work more to attract industry and provide jobs to the state of Rajasthan. Another area that offers Rajasthan a niche opportunity is to value add to agricultural produce that is unique to the state.
It could range from millets to cumin and medicinal plants to organic horticulture. This will provide farmers with additional income and generate employment for a large number of farm labor. Ladies and gentlemen, I would like to once again thank the state of Rajasthan for inviting me and providing me the opportunity to share my experiences. I'm sure that this event will attract investment and generate employment, which is the need of the hour. Thank you. Thank you, sir, to you also for sharing with us your industrial footprints in the state and your further investment and expansion plans. And now inviting Mr. Sudhir Mehta, the chairman of Torrent Group, for his address. Honorable Chief Minister of Rajasthan, Shri Ashok Gehlot ji, Honorable Minister of Industry and Commerce, Srimati Shakuntala ji, all dignitaries sitting on the dais, captain from diverse industry sector, and all eminent guests, ladies and gentlemen. It's an honor to be part of Investment Rajasthan, the investor outreach program committed to collaborate development. It is also an honor to represent Torrent Group, which has played a vital role by its contribution to crucial healthcare, power and city gas distribution sector in India and playing a significant role in overall economic development of the country. Torrent Power, with its vast experience and presence in more than 12 cities of India, is one of the most efficient utility company in the country. Torrent Gas, on the other hand, committed to making natural gas widely available to people in the area of its authorization, and making natural gas widely available create an ecosystem to provide a major boost in the social economic development. The state of Rajasthan has always been an attractive investment destination owing to its rich natural resources, infrastructure facility, investor-friendly policy, backed by ease of doing business and skilled manpower availability. I am happy to share with you that our group company, Torrent Power, is strategically venture into new area of green hydrogen, battery energy storage system, and pump storage hydro, which have a strong synergy to renewable generation. We plan to develop 10,000 megawatt renewable energy project in Rajasthan in phased manner, and we are identifying suitable land parcels for these projects. This proposed plan in renewable energy and hydrogen will involve an investment of more than 60,000 crore, which will help us to grow sustainably, profitability, creating a value for our stakeholder in the medium and long term. Torrent Gas, our other and group company, is one of the youngest and fast-growing city gas distribution utility in the country, authorized by the PNGRB to develop CGD. In Rajasthan, we are authorized in 5 districts: Jaipur, Alwar, Kota, Baran, and Dholpur, for distribution of CNG for vehicle and PNG for domestic cooking industrial unit and commercial established. Torrent proposed to invest more than 6,000 crore for creation of gas distribution infrastructure in the state of Rajasthan. Torrent is committed to connect more than 50 industries in Alwar district and entire Rico Dholpur industrial area by March 2023. This overall infrastructure shall not
only give the citizen a cleaner tomorrow, but also boost to the socio-economic development of the transport sector. On the healthcare front, Torrent plan to invest also in Rajasthan in hospitals and other allied sector. I am sure that Investment Rajasthan Summit will definitely prove to be a fruitful platform for enhancing new investment and creating more business partnership, and also be a platform for valuable deliberation for charting course of balance and sustainable social economic development of the state of Rajasthan. Thank you. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आमंत्रित हैं श्री सी के बिरला जी, चेयरमैन सी के बिरला ग्रुप। उनसे निवेदन है उनके उद्बोधन के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर राजस्थान गवर्नमेंट श्रीमती शकुंतला रावत, डॉक्टर सीपी जोशी, ऑनरेबल स्पीकर, government officials and various dignitaries, ladies and gentlemen. It is a great pleasure to be here with all of you today in Rajasthan, a state where the legacy of the Birla family is rooted. I am proud of the heritage we share and our long personal and business association. A big thank you to the government of Rajasthan for inviting me over here and for the support and encouragement in enabling all our investments in the state. India's economic growth rests on the shoulders of its dynamic states. India is expected to be among the fastest growing large economies in the coming decade, and the states have a critical role to play in accelerating reforms for promoting industry. Rajasthan has made significant efforts in increasing its attractiveness as an investment destination. This gives enormous encouragement to the people like me, and in an increasingly competitive environment where private sector capex has been weak, both industry and investors need a supportive environment with proactive investor-friendly policies. I must add that most states today are becoming increasingly proactive in rolling out investor-friendly policies to invite investments to increase their state GDP and to create employment opportunities through the multiplier effect of capital. Invest Rajasthan is a very important and much-needed event to suitably showcase the opportunities and support available to potential investors in Rajasthan. I am confident that the government of Rajasthan will continue to offer encouragement and support through these policies to accelerate the industrial development in the state and give it a further competitive edge. The Birla family has had a long and rich history on investing in Rajasthan, and I can proudly share that we have just celebrated the 75th anniversary of our world-class bearing manufacturing plant, NBC Bearings, right here in Jaipur. This plant ships its state-of-the-art bearings to the global markets in addition to serving the Indian markets. And as a part of our continued commitment to investing in the state, we have started construction of our third bearing plant in Bagru near Jaipur with an investment of over rupees 1,000 crores. Such is our confidence in Rajasthan that we have another large investment in the state in the shape of a greenfield integrated cement plant planned with an initial investment of around rupees 2,500 crores. With this, we hope to create employment and business opportunities for at least a few thousand families in Rajasthan. Our ambitions for cement are quite large, and we intend to continue to expand the capacity and investments in the next phases of growth. The Birla family has always had a tradition of giving back to the community, and Rukmini Birla Hospital, part of the C.K. Birla Hospital, which was established a few years ago in Jaipur, is an example of a state-of-the-art facility which works closely with our 4 other hospitals and healthcare ventures to capture the best global clinical care and practices. Our family's support to education and other cultural infrastructure, such as the Science Center, Planetarium, and a school in Jaipur,
is well known and needs no introduction. It is heartening to note the initiative the Rajasthan government is taking to improve the ease of doing business in the state by the one-stop shop facility, a major step taken by the government to nurture investor friendliness is very well appreciated. Rajasthan has some inherent advantages. It is very rich in mineral, its proximity and connectivity with the NCR region, and the fact that more than 40% of the Delhi-Mumbai freight corridor passes through Rajasthan. The infrastructure, connectivity, law and order, labor situation make Rajasthan a favorable business destination. To leverage these advantages, the state government has put in place progressive initiatives to attract investments. The recently launched policy like the Rajasthan Investment Promotion Scheme, New Industrial Development Policy, MSME Facilitation Act, etc., with many good and new points added in the policy. We are sure that these policies, and more importantly, further steps to make Rajasthan a competitive destination for capital and skills will bring more investments and employment to the state. From our own experience as a business group, I can say that Rajasthan is one of the favorable places to do business with, and with the recent reforms, we look forward to seeing the competitive position of the state to improve further. Thank you. Thank you, sir, for sharing with us your industrial and very remarkable philanthropic footprints in the state of Rajasthan and your further business plans here. And now inviting Mr. Anil Agarwal, the founder and chairman of Vedanta Group, to please address the August gathering. नमस्कार। मैं जब छोटा था तो हम लोग चौमू में रहते थे और चौमू से फिर यहाँ बापू नगर आए तो वहाँ से दादी मेरे को तांगे में गोविंद देव जी के मंदिर लेके आती थी और 7, 8, 9 साल की उम्र रहती होगी। उस समय वो एक कहानी सुनाती थी कृष्ण और अर्जुन के बीच की, सगुण और निर्गुण। बोलती थी कि अर्जुन ने कृष्ण जी को पूछा कि ये सगुण और निर्गुण में क्या फर्क है। तो उन्होंने कहा कि निर्गुण जो है वो भगवान की खाली भक्ति करता रहता है, वो मेरे बहुत प्रिय है और रात दिन भजन ही करता रहता है। और सगुण जो है वो भी मेरे काम में लगा रहता है, लेकिन कभी उसको मेरी नाम लेने की फुर्सत नहीं रहती है, लेकिन वो खाली मेरा ही काम करता रहता है, खाली मेरे काम में ही लगा रहता है कि कैसे मैं जन सेवा करूं, कैसे मैं समाज का हित करूं। तो अर्जुन ने पूछा कि दोनों में से आपको कौन प्रिय है। उन्होंने कहा दोनों मेरे प्रिय हैं। जो मेरी दादी जी बोलती थी, आप लोग अपने हिसाब से दोनों मेरे प्रिय हैं। बहुत ज़्यादा जोर दिया तो उसने कहा, कृष्ण ने कहा कि सगुण मेरे को ज़्यादा प्रिय है। मैं उसमें हमारे अशोक गहलोत जी को लेता हूँ। मेरे को यहाँ आमंत्रित करने का अशोक गहलोत जी, सीपी जोशी जी, सारे मंत्रीगण, हमारे अडानी साहब, सीके बिरला साहब, सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। ये सब हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और राजस्थान जो एक जगह है वो एक अद्भुत, एक ईश्वर की देन है। किसी जगह को डेवलप करने के लिए नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्स यहाँ भरा हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ह्यूमन रिसोर्स, जो आपको यहाँ काम करने वाले मिलेंगे,
हमारे यंग युवा, मैं उन्हीं के लिए आया हूं कि जो आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, स्पेशली लड़कियों को। मैं लास्ट 2 महीने पहले आया था, उस समय उन्होंने आईटी की कुछ कॉन्फ्रेंस की थी और हर गांव से एक बच्चे को, 2 बच्चों को बुलाया था और उनको प्रेरित किया था कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से अपने गांव का उद्योग को आगे बढ़ाओ। तो उसमें मैंने कहा था कि आप ही लोग इस राजस्थान की धरती को आगे लेके जा सकते हो, और इस तरह की बात भी सोचना सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है। राजस्थान जो है, मैं यहाँ काम करता हूँ, ये दूसरा मिडिल ईस्ट है। यहाँ पे जितना तेल भरा हुआ है, जितनी गैस भरी हुई है, मेरे हिसाब से ये मिडिल ईस्ट का मुकाबला कर सकती है। हमारे यहाँ जो खनिज भरा हुआ है, चाहे वो रॉक फॉस्फेट हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे रेयर अर्थ हो। रेयर अर्थ की मैंने देखा कि पूरी दुनिया में आज शॉर्टेज है। चाइना ने पूरा कंट्रोल कर रखा है। वो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे राजस्थान में है। चाहे वो लिथेनियम हो, चाहे पैलेडियम हो, चाहे जो भी आपको चाहिए वो राजस्थान में है। राजस्थान में सरकार ऐसी है जो आगे बढ़ने देना चाहती है। बहुत सारे काम राजस्थान गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके उनकी ड्यूटी कम कराना, उनको प्रेरित करना, जिससे कि आगे से आगे सिंपल तरीका से हम लोग इस खनिज को, आज हिंदुस्तान में अगर 100 रुपया है तो 63 रुपया खाली इंपोर्ट में चला जाता है, वो भी सारा का सारा नेचुरल रिसोर्स में। और ये सारा नेचुरल रिसोर्स राजस्थान जैसे पंजाब पूरे देश को खाना खिलाता है। हमारा राजस्थान पूरे देश को, चाहे वो किसी भी तरह, आज हम टेक्नोलॉजी में भी जाते हैं, चाहे हम सेल फोन बनाएं, चाहे लैपटॉप बनाएं, चाहे टीवी बनाएं, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाएं, उसमें सबसे ज़्यादा मेटल का ही कंजम्पशन होगा। मैं आज आप लोगों से और भी बोलने वाला हूँ। मेरे सबसे खास मित्र अडानी साहब बैठे हुए हैं। हम राजस्थान में पहले गुजरात में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगा रहे हैं और ग्लास की फैक्ट्री लगा रहे हैं। एक क्लस्टर बनाना चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो बच्चे हैं 15-16 साल के, उनको एक्सेस लैपटॉप का हो। अगर लैपटॉप का एक्सेस उनको हो जाएगा, आज लैपटॉप जो है 1.5 लाख रुपए में मिलता है, अगर वो लैपटॉप 40,000, 45,000, 50,000 रुपये मिल जाए और उसके ऊपर उसको 70%, 80% लोन मिल जाए, तो विंडो टू द वर्ल्ड वो 15 साल 16 साल के बच्चे को हो जाएगा। उसको कोई कोर्स करना है, उसको मालूम पड़े कि ये मेरा शौक़ है, इसमें मैं अपना करियर डेवलप करना चाहता हूँ। ये हमने एक्सपेरिमेंट जयपुर के पास में एक कॉलेज है रिंगस में, उसमें किया। 5,000 बच्चों को हमने दिया, वो दूसरे लेवल पर हैं। तो ये मैं आप लोगों को एक आह्वान करना चाहता हूँ, एक तो नेचुरल रिसोर्स में और एक टेक्नोलॉजी में जो राजस्थान अग्रसर हो सकता है। आपसे एकदम राजस्थान और गुजरात तो एक साथ जुड़े हुए हैं। 1 घंटे की ड्राइव में आप गुजरात पहुँच सकते हैं। हम लोग दोनों स्टेट जुड़े हुए हैं। वहाँ से अगर रॉ मटेरियल आए और एक क्लस्टर बने, जिससे कि हम लोग यहाँ पे, आज हमारे गरीब से गरीब लोग 20,000 रुपये का फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये फ़ोन अगर सेमीकंडक्टर और ग्लास अगर यहाँ बनने लगेगा तो 4,000-5,000 रुपये में फ़ोन मिलेगा। लैपटॉप जो है 40-50 हज़ार रुपये में लैपटॉप मिलेगा। और जो टीवी जो आज हमें 30,000-40,000 रुपये लगते हैं, वो 5,000 रुपये में मिल सकता है। और ये हम लोग तो सपनों में ही रहते हैं और सपने ही देखते हैं। अगर सपने देखना किया तो सपने साकार भी हो जाते हैं। 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की इंडस्ट्रियां लगे, राजस्थान सबसे सस्ता पावर देगा, सबसे सस्ता यहाँ ह्यूमन रिसोर्स है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है
और जो हमारे अशोक गहलोत जी के राज में जिस तरह का परिवर्तन आया है, गरीब से गरीब लोगों को जो परिवर्तन आया है, ये पूरी हिंदुस्तान देखती है, पूरी दुनिया देखती है। मैं कनाडा में 3 दिन पहले था, वहाँ भी लोगों ने कहा, क्योंकि आजकल सब लोगों को सब चीज़ मालूम रहती है कि जो खनिज कनाडा में है उससे ज़्यादा राजस्थान में, उन्होंने बताया। कनाडा में हम लोग 6 महीने ही काम कर पाते हैं क्योंकि ठंड बहुत रहती है, 6 महीने हमको माइनें बंद करनी पड़ती है। लेकिन राजस्थान ऐसी जगह है जहाँ की आप 12 महीने अपनी माइंस चला सकते हैं। 2000 जो ज़मीन में पत्थर हैं, आज हमारे यहाँ राजस्थान में कम से कम 30 तरह के पत्थर हैं, जिसकी इतनी डिमांड है पूरी दुनिया में। और हमारे अशोक गहलोत जी ने बहुत मेहनत करके मीडियम साइज़ के व्यापारियों को आह्वान किया है कि इसका ऑक्शन करें, इस क्लस्टर को लें, इसको डेवलप करें, और इंसेंटिव दे रहे हैं कि अगर इसको आप फिनिश प्रोडक्ट भी बना सकते हैं तो इसमें हम आपको और इंसेंटिव देंगे। जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बन के एक में 1000 आदमी के लगभग लोग काम करेंगे। ये भी एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है जिसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। मैं अगली दूसरी बात पे आता हूँ, टाइम कम है, तो युवाओं के लिए जितना खेल कूद में हमारी लड़कियाँ, हमारे लड़के अग्रसर हो रहे हैं, बहुत दिनों से बात चल रही थी। मेरे को मौका लगा गुजरात में अहमदाबाद में स्टेडियम देखने का। मैं आश्चर्यचकित रह गया। इस वर्ल्ड क्लास के स्टेडियम बना अहमदाबाद में। हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत इच्छा थी कि ऐसा स्टेडियम जयपुर में भी बने, और मेरे को उन्होंने धीरे से कहा, आप इसमें भागीदारी लीजिए और इसको पूरा कीजिए। मैं आप लोगों के सामने आज सामने से ऑफर करता हूं कि मैं पूरा साथ दूंगा मुख्यमंत्री जी का, और इस स्टेडियम को बनाएं। हमारे बच्चे, मैं पूरा साथ हूं। हमारे लड़के लड़कियों को जरूर आप आगे बढ़ाएं। हमारी लड़कियां राजस्थान की सबसे ज़्यादा अग्रसर हैं। आप लोग भी अगर कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं हर क्षेत्र में, 30 से 40% लड़कियों को जरूर आगे लाएं, उनको काम दें। आप विश्वास माने, हम राजस्थान में लड़कियों को आगे प्राथमिकता देते हैं। 3-3 किलोमीटर नीचे माइंस में वो जाती हैं, सबसे अच्छा प्रोडक्शन करती हैं। तो आप लोगों को ये बहुत ये इतना बड़ा उद्घाटन हो रहा है, इतनी बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। इतनी दूर से मैं एक्साइटेड था आने के लिए, मिलने के लिए। हमारे जो भी हम प्रोडक्ट यहाँ बनाते हैं उसमें डाउन स्ट्रीम में हम कुछ भी आपकी मदद कर सकें, किसी भी काम में आ सकें। हिंदुस्तान जिंक केन आपके साथ में है। एक बार फिर मुख्यमंत्री जी का, पूरे राजस्थान सरकार का और आप लोगों का, जो आप इतनी दूर दूर से आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके प्रोत्साहन भरे संदेश के लिए, और साथ साथ राजस्थान की ओर विकास की तरफ आपके अग्रणी विचारों और सुझावों के लिए भी धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we were supposed to be joined today also by Shri Ellen Mittalji, the Chairman and Managing Director of ArcelorMittal. Unfortunately, due to some unforeseen circumstances, he's not been able to join us, but he has sent across his message. And I would like to now invite and request Mr. Prabhat Das, the CEO and Managing Director of HPCL Mittal Energy Limited, to please read out the message of Mr. Ellen Mittal. Mr. Ellen Mittal was very eager to be with you all today. However, last-minute health issues have restrained him from coming to India. He has conveyed his personal regret to you all and to Honorable Chief Minister for this inconvenience. I will read out his message. Honorable Chief Minister Shri Ashok Gehlot Ji, Honorable Minister for Industries Srimati Shakuntala Rawat Ji, Shri C.P. Joshi Ji, distinguished
recipients of the prestigious award, delegates, ladies and gentlemen, a warm welcome. I am thankful to you all for honoring me with Rajasthan Ratna. This is Rajasthan's highest award and I accept it with pride and humility. This is an honor, especially touches me. For Rajasthan is a state of my birth. I was born in Sudalpur in the north. Our family dreamt, and as a young man, I moved east to another land, another set of dreams. So being here today, back where it all started, felt like completing a journey. I'm humbled to be in the company of other recipients who have chased dreams in business and law and have contributed so much. My sincere congratulations. I thank you again, the golden state of Rajasthan. My relationship with Rajasthan has always remained true and firm. The feeling of belonging has stayed with me wherever I found myself making steel, most recently in India itself. What has also remained true is my belief in preparing for next generation, the young people who will be future recipient of Rajasthan Ratna. This is why my family foundation decided about 2 years ago, under the guidance and support of Ashok Gehlot ji, to set up a place of learning, and we chose 100 acres of land near Jaipur city. Today, this college is a dream university preparing for young people for the world of deep change with undergraduate, postgraduate, and doctorate program. What has inspired me is the sight of graduating students responding to access and opportunity. Our university has served thousands of students and faculty members across the field of technology, engineering, and artificial intelligence. We are now taking a quantum jump, and we are setting up an artificial intelligence data center in this institute. The next level, of course, our common challenge. Our country has achieved many recognitions for its technology capability. But unless we prepare our young men and women for the next wave, then they will be disadvantaged. The vast opportunity squandered our country. My own plea is for education and skill enhancement to train the jobs for the future, advanced manufacturing, research laboratory, and frontier technology. So we must step up skill training not only at the top end, but also across the chain of industry capabilities in an economy changing before our eyes. And let me say, these jobs are coming. Our economy is responding to the positive government policies and shift to its own level in the energy transaction, in supply chain management, and in enhancing engineering. Let me come back to Rajasthan and say that Honorable Chief Minister, under his great leadership and vision, the government machinery is very swiftly moving and effectively developing the state of Rajasthan. The state of Rajasthan has a lot of potential, and we are committed and working for the development of the state. I wish a grand success for this new initiative of Honorable Chief Minister on Invest Rajasthan. Thank you. Namaskar. Thank you, sir, for sharing with us the views and the investment plans by Mr. Mittal in the state of Rajasthan. And now, ladies and gentlemen, inviting Mr. Gautam Adani, the founder and chairman, Adani Group, to please address this August gathering. Honorable Chief Minister, Shri Ashok Gehlot ji, senior leaders of government, captains of industry, and my dear friends. It is a privilege to be attending the Invest Rajasthan 2022 Summit
and have this opportunity to talk about the existing presence and future plans of the Adani Group in this magnificent land of kings we call Rajasthan. This is the soil that gave us some of our bravest national figures, Amira Deva, Maharana Kumbha, Hemchandra Vikramaditya, Maharaja Surajmal, and of course, Maharana Pratap. The toughest of the deserts gave us the greatest of our warriors. No wonder I find every visit to Rajasthan personally very inspiring. Honorable Chief Minister, during your previous term, when I first met you to express our interest to invest in the power sector in Rajasthan, I clearly recall how you immediately supported us and directed your administration to identify and allocate land, water, as well as other clearances in the shortest time possible. That was the fastest decision-making process I have ever witnessed. And it was the speed which allowed us to set up 1320 megawatt Kawai super thermal power project in just 36 months. A record for India and a record for any power plant the Adani Group has built. Honorable Chief Minister, sitting next door in Gujarat, I'm also privileged to have a ringside view of your leadership. In Rajasthan's social upliftment, as well as in the state's economic growth. The social welfare schemes you have implemented, like the Jagriti Back to Work scheme, the Shakti Udan Yojana, and the Mukhyamantri Anupriti coaching scheme are trendsetter and driving employment, enabling greater and inexpensive access to education and healthcare, thereby making social security very stronger. These schemes have been a benchmarks for India in their scale, their intent, and the impact that they have had. In the economic domain, your vision has laid the foundation to turn Rajasthan into our nation's solar energy leader. It is fascinating to see you repurpose what many call the inhospitable Thar Desert into one of the global capitals of our renewable power. Our commitment to your vision is reflected in our actions. Our joint venture with the Rajasthan government, which has led to a fully functioning solar park of a 10,000 megawatt, is already operational and producing over 1,500 megawatt of a green power. Also, our group's direct investment into renewable in Rajasthan continues to accelerate and have already commissioned projects of more than 4,000 megawatt at an investment over rupees 20,000 crores. In addition, over the past decade,
we have been supplying fuel to the state thermal power station to help produce over 4,300 megawatt of the thermal power plant. We have been operating 19 grid substations and associated high voltage transmission lines, operating the dry port container terminal in Kasaragod, managing and expanding the Jaipur airport, as well as operating 2 edible oil refineries in Alwar and Bundi. Overall, I am proud to say that Adani Group has already invested over rupees 35,000 crore across multiple industrial sectors in the state of Rajasthan. Let me now talk about our future investments. Continuing our investment in renewable business, another 10,000 megawatt with an investment of rupees 50,000 crore is under implementation. And this will be commissioned progressively over the next 5 years. In this context, just a week ago, we also achieved commercial operations of the world's largest wind solar hybrid power plant, and it is here in Rajasthan. Following our acquisition of Ambuja Cement and ACC, we are now the second largest cement manufacturer in India. While we already have 3 plants and a limestone mining asset, a significant part of our capacity expansion will continue to happen in Rajasthan. We anticipate investing another 7,000 crore rupees to double our cement manufacturing capacity in the state. There is more. Other projects in various stages of execution and expansions include expanding the Jaipur airport into a world-class facility, developing our networks to supply PNG and CNG, and accelerate cleaner fuel availability to industrial, commercial, transport, and domestic consumers. New transmission projects to move the renewable power being generated. Combining all ongoing and future investments, we anticipate investing an additional rupees 65,000 crores in Rajasthan over the next 5 to 7 years and creating over 40,000 direct and indirect jobs. The Adani Group is also making one of the world's largest bets on energy transitions. In this process, we are betting on green hydrogen. Given our ability to generate the most inexpensive solar and wind power, I believe this opportunity to generate green hydrogen to transform Rajasthan deserts into an oasis of jobs enabling energy transitions is an opportunity that no other state has. Honorable Chief Minister, this will be yet another game changer aligned with your vision for the sustainable industrial development of Rajasthan. Gehlot-ji, just as the warriors of Rajasthan had turned their understanding of the deserts into their greatest strength, you have set in motion a moment that is yet again turning the deserts of Rajasthan into the state's greatest strength. I wish you and your team all the very best
Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for sharing with us the very massive and impressive footprints which you have in the state of Rajasthan and your further investment plans being partners in success with the state. Thank you, sir. और हम विशेष रूप से सभी हमारे कैप्टन्स ऑफ द इंडस्ट्री का भी धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ अपने विचारों को साझा करने का और अपने जो गेम चेंजिंग प्लान्स हैं राजस्थान की उन्नति और प्रगति की तरफ वो हमारे साथ यहाँ पर अपने उद्बोधन में साझा करने का। और देवी सज्जनों, अब हम सभी इच्छुक हैं हमारे नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश को सुनने के लिए। तो सभी की तरफ से मैं करबद्ध होकर निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, श्री अशोक गहलोत जी से, कि हम सभी के मार्गदर्शन हेतु अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। यहाँ उपस्थित हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी, अध्यक्ष अडानी ग्रुप गौतम अडानी जी, अध्यक्ष वेदांता समूह अनिल अग्रवाल जी, सुधीर मेहता जी, सी.के. बिरला जी, एच.एम. बांगर साहब, चंद्र नील बैनर्जी, अजय श्रीराम जी, बी संतानम जी, अरविंद मायाराम जी, उषा शर्मा जी, चीफ सेक्रेटरी, वीनू गुप्ता जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कुलदीप रांका जी, और मेरे तमाम कैबिनेट के मंत्रीगण, विधायकगण और जितने भी इन्वेस्टर्स आए हैं, अधिकारीगण, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से जितने हमारे मेहमान आए हैं, डेलीगेट आए हैं, लगभग 3000, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये राजस्थान इन्वेस्ट का आयोजन लंबे अरसे से चर्चा में था। मुझे खुशी है कि आज हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं हमारे साथियों को एक के बाद एक। गर्व होता है प्रदेश पे भी और देश पे भी। आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लंबा सफ़र तय करते करते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं जिस रूप में आप बैठे हुए हैं, और ये आयोजन हो रहा है। मेरे ख्याल से जब आज़ाद हुआ मुल्क तब हालात दूसरे थे। राजस्थान जैसे प्रदेश में 13 मेगावाट बिजली थी। लोग समझते नहीं थे बिजली होती क्या है। राजा महाराजाओं के महलों में बिजली टमटमाती थी, खाली कोई जनरेटर थी। आप कल्पना कीजिए हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। इसका गर्व पूरे देश को है, होना भी चाहिए। पानी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, बिजली में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। 13 मेगावाट से आज 23,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली का उत्पादन राजस्थान हो रहा है। शिक्षा क्या थी कोई सोच नहीं सकता। अब जाल बिछ रहा है। जब मैं 24 साल पहले था मुख्यमंत्री पहली बार, तो 6 विश्वविद्यालय थे। आज 89 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर, 89 विश्वविद्यालय। अभी मैंने 3 साल में 200
10 कॉलेज खोले, उसमें 91 गर्ल्स कॉलेज हैं। और मैंने कहा कि जहाँ 500 गर्ल्स मिल जाएगी वहाँ हम लोग कॉलेज खोल देंगे। आज लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ी राजस्थान के अंदर। तो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, जिसका जिक्र किया गया, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। सरकार खुद आगे आकर के शिक्षा को प्रोत्साहन दे रही है। विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, अनुपति के अंतर्गत कोचिंग फ्री बच्चों को, और साथ में अभी 200 छात्रों को दुनिया के किसी मुल्क में जाएंगे बच्चे, उनका पूरा खर्चा पड़ेगा सरकार उठाएगी। ये मैंने घोषणा करेगी बजट के अंदर। और मेरे ख्याल 160 बच्चे जा चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमने अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है देश के अंदर, और ये आयोजन भी हो रहा है, हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है। सड़कें शानदार राजस्थान के अंदर, इन्वेस्टर के लिए सोचने की बात है कि चाहे लेबर अनरेस्ट हो, यहाँ नहीं मिलेगी आपको। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ ज़्यादा अच्छी है। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेगा हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स का जाल बिछ गया है। तो एक इन्वेस्टर को जो सुविधाएं चाहिए, जिससे आपने देखा अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने फिल्म के माध्यम से भी और अपनी स्पीच के अंदर बताया आपको कि सब तरह से हमारी जो पॉलिसीज है किसी भी तरह की, वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी बन रही है। और कस्टमाइज्ड पैकेज अलग मिल रहे हैं। पॉलिसी में हमेशा राजस्थान ने ये प्रयास किया है कि कैसे इन्वेस्टमेंट आकर्षित हो। चाहे विंड जब आया था पहली बार, मुझे याद है 3-4 मेगावाट से मैंने उसका शिलान्यास किया था जैसलमेर के अंदर। मुझे तांती जो अभी हाल ही में उनका स्वर्गवास हो गया है, बहुत दुखद घटना थी, सुजलोन कंपनी से। फिर 4,500 मेगावाट तक हमने विंड एनर्जी पैदा करी। गौतम अडानी जी कह रहे थे जिस प्रकार से हमने सोलर को प्रमोट किया है, और सोलर को प्रमोट करने से आज 10,000 मेगावाट से अधिक बिजली सोलर से बन रही है। तो जो स्कीम, जो पॉलिसी सरकार ने रखी है, मैं समझता हूँ कि उसके कारण से इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बना राजस्थान के अंदर। और उसी रूप में हम लोग चाहते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर भी, कोरोना आ गया था, बहुत स्थिति ऐसी बन गई थी, पर मुझे खुशी है कि कोरोना के बाद में भी जो माहौल बना है आर्थिक क्षेत्र में, वो वापस रिकवर बहुत जल्दी हुआ है, क्योंकि हमने कुछ फैसले भी किए। हमने उद्योगों को सहारा दिया, वैट में, ट्रांसपोर्ट में, एक्साइज में, स्टैम्प ड्यूटी में। होटल्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, टूर ऑपरेटर हैं, इन सबको महसूस करवाया कि इस संकट की घड़ी में इंडस्ट्री के साथ में, व्यापार के साथ में, टूरिज्म के सेक्टर के अंदर, जैसा भी हमने टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है और लागू भी कर दिया। कल मैं कह रहा था कि जब मैं 35 साल पहले मंत्री खुद था टूरिज्म और सिविल एविएशन का, इंदिरा जी और राजीव गांधी जी के साथ में, तो मेरा सपना था कि टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए। घोषणाएं हुई, पर जो वास्तव में छूट मिलनी चाहिए वो लागू कभी नहीं हुई। संयुक्त लिखा था मेरे ही हाथ का, इसलिए हमने इस साल के बजट में हमने टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। और पूरा इंडस्ट्री जो टूरिज्म की है
वो तमाम इस बात को लेकर बहुत ही प्रभावित थे। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि राजस्थान में CIA का जो साथ में सहयोग रहा हमारे साथ में, माहौल बनाने में बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हासिल में हुई। सहयोग से CIA और राजस्थान सरकार का पिछले 25-30 साल से मैं समझता हूँ कि अच्छे संबंध रहे हैं। मैं भी बहुत प्रभावित हूँ। कल मैं गया था CIA के काउंसिल की मीटिंग के अंदर, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ कि जिस प्रकार का माहौल मैंने देखा वहाँ, उनमें जज्बा है काम करने का सरकार के साथ मिल के। और ये भी एक शुरुआत हुई 91-92 के अंदर, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे नरसिंह राव जी के वक्त में। और जिस प्रकार से कोई जमाना था लाइसेंस कोटा परमिट का, उदारीकरण का माहौल जब बनने लगा, बनाया गया, फैसले किए गए, उसके बाद में अब ये ऐसी संस्थाएं जो पहले सबकी निगाह से देखती थी सरकारों को, और सरकारें सबकी निगाह से देखती थी संस्थाओं को, अब आपस में समन्वय के साथ में काम शुरू हुआ है देश के अंदर। उसका इम्पैक्ट है, मिलके काम कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है तो कई नई बातें सीखने को मिलती है। इस माहौल में हम लोग चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान उदाहरण है। CII और स्टेट गवर्नमेंट, पिछली बार सरकार थी तब भी इसी प्रकार का माहौल था CIA के साथ में। हमारी सरकार उसके पहले थी तब भी CIA का समर्थन पूरा साथ रहा। तो एक नई शुरुआत जो हुई है, और राजस्थान में भी हम लोगों ने जिस रूप में पिछले 3 साल में काम किया है, तो आपको जान के खुशी होगी, उसके कारण से 3 लाख करोड़ की जो स्टेट GDP है उसमें बढ़ोतरी हुई। एक प्रतीक है कि वो विकास का प्रतीक है राजस्थान के अंदर। 3 साल में कोरोना के बावजूद भी आप सबके सहयोग से जो 3 लाख करोड़ की GDP बढ़ी है, और टोटल GDP का आकार अब जो है 12 लाख करोड़ हो गया है राजस्थान के अंदर। ये प्रतीक है कि विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा है राजस्थान के अंदर, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। ये तमाम पैरामीटर बताते हैं कि राजस्थान सरकार की जो नीतियाँ हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, व्यापार के लिए, विकास के लिए, चाहे वो कोई सेक्टर हो, हम सही दिशा में जा रहे हैं। इसलिए इंडिकेटर हमारे सामने आए हैं। इसके अलावा हम लोग जो है कुछ बड़े फैसले भी हमने किए हैं। एक तो रिको की जो आज 50 साल रिको को बने हुए, उसका अपने एक स्थान है देश के अंदर। मैं समझता हूँ कि रिको की उपलब्धियाँ 50 साल में कम नहीं हुई है राजस्थान के अंदर, और वो आज देश के अग्रणी औद्योगिक संस्थानों में है। 390 तो खोल दिए सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर रिको की इकाइयाँ बन गई है, क्षेत्र बन गया औद्योगिक, और 147 में बनने जा रहे हैं। मतलब आप कल्पना कीजिए, राजस्थान के हर SDO हेडक्वार्टर पर, उपखंड क्षेत्र पर औद्योगिक इकाइयाँ बन रही है। तो आप सोच सकते हो कि वहाँ के स्थानीय लोगों को, चाहे MSME के हों, चाहे अन्य उद्योग हों, उनको एक सुविधा मिल रही है। इसके साथ में हमने जयपुर में फिनटेक पार्क विकसित किया जा रहा वहाँ पर, जिस सभी सेक्टर का और विकास हो सके। साथ में जोधपुर के अंदर राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट बन रहा है 600 करोड़ की लागत से, जिसे क्वालिटी एजुकेशन भी वहाँ मिल सके। ये हमारा प्रयास है। युवाओं के लिए, सभी सेक्टर के लिए, MSME स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज उपलब्ध कराने के लिए जयपुर, जोधपुर, कोटा में 200 करोड़ की लागत से नॉलेज
इनोवेशन हब की स्थापना की जा रही है। सीतापुरम अभी वो काम भी जल्दी शुरू होगा, जयपुर के अंदर भी। और भिवाड़ी, बोरानाड़ा, जोधपुर में 250 करोड़ की लागत से मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विकसित करने का मैंने घोषणा की थी बजट के अंदर। डीपीआर बन रही है इन सबकी। एक नए रूप में सरकार सामने आ रही है हेल्प करने के लिए इंडस्ट्रीज को, उद्यमियों को। ये जो पैसे बन रहे हैं आपके मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इसमें आईटी, रेडीमेड, गारमेंट, ज्वेलरी, सर्विस सेक्टर इकाइयों को प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज की स्थापना करने में सहयोग मिलेगा। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जिस रूप में सरकार बनते ही हमने एमएसएमई एस्टेब्लिशमेंट और फैसिलिटेशन एक्ट 19 से पास किया था, 2019 में पास किया था। उसमें 3 साल तक सरकारी स्तर पर कोई भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं रखी गई थी। शायद आपको मालूम होगा, अब 3 साल से हमने 5 साल कर दिया है। 5 साल तक कोई भी सरकारी परमिशन की आवश्यकता नहीं रहेगी एमएसएमई इकाइयों को, और एक्ट बना के ये किया जा रहा है। इसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि सिंगल विंडो सिस्टम हो, चाहे वो अनुमति एक साथ मिल जाए, ये सिंगल स्टॉप शॉप की बात की गई है। हालांकि मुझे अभी भी मैंने कहा है हमारे अधिकारियों को, एचईएस इंडस्ट्री को भी, इसमें और गुंजाइश है और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें इंडस्ट्री से आकर के, इसकी ज़रूरत है। क्योंकि लंबे समय से शिकायत मिलती थी आज़ादी के बाद से कि जब जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो हमें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी कुछ कमी हुई है, काफ़ी हमने फैसले किए जिससे कि और फ़ायदा मिला है। इसको और हम लोग चाहेंगे कि कैसे ठीक करें। वैसे बहुत सारे हमने फैसले किए, अभी वक्त नहीं है कि मैं उन फैसलों की तरफ आपका ब्रीफ करूं, पर मैं इतना कह सकता हूं कि कई कामों के अंदर राजस्थान एक मॉडल बन रहा है देश के अंदर, और वही हमारे लिए एक शुभ संकेत है। और जो अभी करीब लगभग 11 लाख करोड़ के जो एमओयू साइन आपने किए हैं, ये पहला है अवसर जब अधिवेशन के दरमियान में कोई एमओयू साइन नहीं हो रहे हैं। पहले काम एडवांस में कर दिया गया कमिटेड एंड डिलीवर्ड थीम के साथ में, पहले ही आप ये काम करें जिससे सरकार अपना काम करने लग जाए। 11 लाख करोड़ के मैं समझता हूँ कि एमओयू एलओई का स्थगित होना या करार होना मैं समझता हूँ बहुत शुभ संकेत है। और वास्तव में अगर ये लागू हो जाते हैं, जो कि संभव नहीं होता है फ्रैंकली स्पीकिंग। गौतम भाई बैठे हैं, गुजरात के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत गुजरात वाइब्रेंट किए थे, और मेरे ख्याल से मुझे पता नहीं एक्चुअल में, पर जो सुनते थे 15, 20, 25% समझ लो आप, हो सकता है ज़्यादा कम हो। हम कोशिश करेंगे कि एडवांस में हमने काम किया है तो क्यों नहीं हम लोग कोशिश करेंगे उसे आगे बढ़े। डिपेंड करता है कि स्थिति क्या रहती है। कई बार मंदी के दौर चलते रहते हैं दुनिया के अंदर। मुझे खुशी है कि मनमोहन सिंह के वक्त में भी मंदी का दौर आया था, पर असर कम पड़ा देश के अंदर। अब भी ऐसे फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। कई बार तो यूक्रेन में युद्ध हो गया, उसका असर पड़ जाता है देश के अंदर। ये तमाम बातें चलती है, पर मैं समझता हूँ कि जो गुजरात की बात अभी कर रहे थे गौतम भाई, गुजराती तो देखिए आज़ादी के पहले से ही बहुत सक्षम रहे हैं। आपके वहाँ तो टेक्सटाइल उद्योग और क्या क्या इंडस्ट्री, औद्योगिकरण जो मैं समझता हूँ कि आज़ादी के पहले से ही गुजरात में बहुत ज़्यादा रहा है। गुजरातियों का माइंड ही व्यापारिक माइंड रहा है शुरू से ही, और इसीलिए सक्षम राज्य रहा है। आर्थिक रूप से संपन्न राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, ज़्यादा गुजरात समझ लीजिए, हमेशा रहा है।
और कई बड़े बड़े उद्योगपति उस जमाने में भी, मैं पूछा था भी गौतम भाई, विक्रम सारा भाई से लगा के लालजी भाई, कई लोग रहे हैं। बाद में धीरूभाई अंबानी आ गए, अब गौतम भाई आ गए। तो गुजरात का अपना एक और अलग रहा है। पर गौतम अडानी जी, मैं कहना चाहूँगा राजस्थान की बात, जहाँ अकाल सूखे पड़ते रहे हैं आज़ादी के पहले से, सदियों से, उस प्रदेश के अंदर अकाल सूखे पड़ते रहते थे। माइग्रेशन होता था यहाँ से। पशुओं का पानी की व्यवस्था करो, रोजगार की व्यवस्था करो मनुष्यों के लिए, चारे का प्रबंधन करो, क्या क्या नहीं होता था, मैंने बचपन से देखा है। पर ये बात तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे राजस्थान के लोगों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए गौतम भाई, कि आपके यहाँ तो प्रारंभ में ही ऐसा माहौल था। आज तो गौतम अडानी का नाम सुनते हैं कि दुनिया के 2 अमीर लोगों में आ गया है। ये तो आपका बधाई के पात्र है आप। पर हम जो है, हम अकाल और सूखे की धरती थी, तभी देश को बहुत कुछ देने का प्रयास किया। घनश्याम दास बिरला जी गांधी जी के सबसे विश्वास पात्रों में थे। जमनालाल बजाज, जिन्होंने सेवाग्राम आश्रम बनाया गांधी जी के लिए, राजस्थान की शेखावटी से, सभी शेखावटी के लोग थे। जितने ही बड़े बड़े घराने हुए हैं देश के अंदर, चाहे वो बिरला हो, बांगड़ हो, पोद्दार हो, गोयनका हो, सिंघानिया हो, अग्रवाल हो, कितने घराने हुए हैं, सब राजस्थान के शेखावटी से गए हैं। अकाल सूखे का मुकाबला करने के लिए गए, तकलीफ में गए थे। कहावते हैं साहब, एक खाली हाथ गए थे और पूरे देश की इकोनॉमी को उस वक्त भी उन्होंने स्मृत किया। और आज भी ये घराने देश के अंदर छाए हुए हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले लोग हैं। तो कहाँ तो गुजरात, कहाँ राजस्थान, ये तो आप कंपेयर करोगे। इस प्रकार के हमारे लोगों ने सब कुछ किया है देश के लिए। और गांधी जी के वक्त में तो बजाज, जमनालाल जी तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर भी थे। आश्रम गांधी जी ने बनाया सेवाग्राम में, वर्धा के अंदर। उस वक्त की सोच अलग थी, वो जमाना अलग था। वो जमाना अब कहाँ रहा है, अब तो स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज ये मुबारक मौका, इसमें मैं समझता हूँ कि ये बात तो हुई है, पर साथ में सम्मान जो हम राजस्थान रत्न से कर रहे हैं, उसके पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अनिल अग्रवाल बैठे हुए हैं। अब अभी अखबारों में चल रहा है काफ़ी दिन से, उसके लिए धन्यवाद है। आपने सीपी जोशी जी के आग्रह को भी और मेरे आग्रह को स्वीकार करके आपने क्रिकेट, जो आजकल बहुत पॉपुलर है, स्टेडियम बनाने की जिम्मेदारी ले ली है। उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र राजस्थान प्रदेश वासियों की तरफ से। चौमू में आपने पढ़ाई करी, अब चौमू के नाम आते ताली बजती है कि आप कहाँ से उठ के कहाँ पहुँच गए हो। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप चर्चा में आए हुए हो, 1,60,00,000 करोड़ की आप इंडस्ट्री लगा रहे हो। सेमीकंडक्टर, अभी दुनिया के अंदर शायद आप लोगों ने मालूम होगा, पिछले साल भर से, 1.5 साल से, कोरोना के बाद में, चाइना के डिस्टर्ब होने के बाद में, जो चिप होती है, वो चिप का ही खेल है। चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, और चाहे कारें हो, चिप नहीं है तो सब कारें बनी पड़ी हुई है। देश नहीं, दुनिया के अंदर क्राइसिस है। उस क्राइसिस में अनिल अग्रवाल जी जो यहाँ पर तेल निकाल रहे हैं राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान जिंक चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और ध्यान भी रख रहे हैं राजस्थान का, इसमें कोई दुराय नहीं। चिंता करते रहते हैं। राजस्थान में माइंस एंड मिनरल की कमी नहीं है, उसका दोहन कैसे हो साइंटिफिक तरीके से, ये इनकी सोच रहती है। जब कभी आते राजस्थान में, ये चिंता करते हैं। पर ये जो फैक्ट्री आपने तय किया है सेमीकंडक्टर के नाम से, जहाँ चिप बनेगी, लैपटॉप बनेंगे, उसकी ग्लास बनेगी, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है।
और अभी महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है कि ये जो है अनिल अग्रवाल इसको शिफ्ट क्यों कर रहे गुजरात के अंदर। मैं कहना चाहूँगा अगर महाराष्ट्र की गुजरात की झगड़ा है इसको राजस्थान शिफ्ट कर दीजिए आप, तो झगड़ा मिट जाएगा। राजस्थान आपका अपना है, राजस्थान आपका अपना है, राजस्थान रत्न से आप सम्मानित होने जा रहे हैं, तो इस झगड़े को मिटाइए आप। तो काफ़ी अखबारवारी हो चुकी है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, मैं आपको साधुवाद देता हूँ, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। पर साथ में जो शिफ्ट की जो है क्राइसिस, उसको मिटाने में आप बहुत बड़ी भागीदारी निभाएंगे, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अब हमारे जो है हमारी अपनी विभूति हैं, जिसमें यहाँ उपस्थित अनिल अग्रवाल सही है और एलएन मित्तल आ नहीं पाए थे क्योंकि उनकी तबीयत कल रात को अचानक ही तकलीफ आ गई, तो उनका कल मैसेज आ गया था। पर साथ में अनिल अग्रवाल जी हो, चाहे हमारे आर.एम. लोढ़ा साहब हो, जो पहले राजस्थान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, सीआई बने थे, जोधपुर से हैं वो। दलील भंडारी जी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज हैं, और मालू साहब को आप जानते हो, वीणा के नाम से उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर राजस्थानी को, राजस्थानी कल्चर को पहुंचाया है लोकगीतों के माध्यम से भी। और चीन का निज़ाम जो अपना आप एक हस्ती है, बड़े शायर भी हैं, देश में दुनिया में जाते रहते हैं। तो सरकार ने तय किया है कि इन पांचों का जो है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, आप सबकी तरफ से, पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से। और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। और मैं समझता हूँ कि ये सम्मान जो है हमेशा सम्मान करके समाज खुद सम्मानित होता है, क्योंकि प्रेरणा मिलती है नौजवानों को भी कि हम भी क्या ज़िंदगी में काम करें जिससे कि हम सम्मान के पात्र हो सकें। और मेरा मानना है कि ये परंपरा सदियों पुरानी है। हमेशा समाज सेवकों का, महापुरुषों का, सीमा पर जो शहीद होते हैं उनकी मूर्ति लगती है, उनका सम्मान होता है। ये हमारी महान परंपरा, हमारी संस्कृति का अंग है। मुझे खुशी है कि आज इन 5 हस्तियों को सरकार ने सम्मानित करने का तय किया है। उसके पहले भी जब हमारी गवर्नमेंट थी तब हमने कुछ हस्तियों को सम्मानित किया था, पर सरकार बदलने के साथ साथ में कई बार फैसले बदल जाते हैं। अभी हमने इस बार ऐसा पक्का इंतजाम कर रहे हैं, सरकार किसी की भी आए पर फैसले कायम रहे। क्योंकि मुझे कई बार दुख भी होता है, रिफाइनरी को लेके मैं बार बार बोलता रहता हूँ। रिफाइनरी 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो तेल निकालते हैं अनिल अग्रवाल जी रिफाइन करने का एसपीसीएल के साथ में। 5 साल डिले हो गया, सरकार बदल गई, तो वो 40,000 करोड़ की रिफाइनरी 70,000 करोड़ की हो गई। 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। सरकारें बदले, हमारी सरकार आती है, हम कोई पुरानी सरकार के फैसले को नहीं बदलते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। वसुंधरा जी के वक्त में ERCP की योजना बनी 13 जिलों के लिए पानी की, हम उनको चालू रख रहे हैं। आप सुनते होंगे, मुझे बार बार बोलता हूँ मैं प्रधानमंत्री जी के लिए, भाई आपने वादा किया था जयपुर में, अजमेर में राष्ट्रीय परियोजना बनाओ इसको। तो कई काम ऐसे जो कि हमारी सरकार चली गई, काम रुक गए। हमने तय कर रखा है हमारी सरकार रहे, हम बदलेंगे नहीं बल्कि उनको आगे बढ़ाएंगे। ये मेरी सोच है। ये मुबारक मौका है। खाली एक स्कीम की बात मैं करना चाहूँगा। वैसे कि स्कीम हमारी नवाचार हमने कर रखे हैं देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी को भी हम लिखते रहते हैं कि भाई ये नवाचार आप पूरे देश में भी लागू करो। पर चिरंजी योजना जो बार बार जिसकी चर्चा होती है,
दुनिया को घूमते रहते हैं। गौतम भाई और अनिल जी, सीके बिरला साहब बैठे हैं, अजय श्रीराम जी बैठे हुए, सब लोग बैठे हुए हैं और बाकी हस्तियाँ बैठी हुई सारी। दुनिया को मालूम है कि दुनिया में सोशल सिक्योरिटी होती है, विकसित राष्ट्रों के अंदर भी। वक्त आ गया कि देश के अंदर भी हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी मिले। कोरोना के अंदर मैंने कहा था कोई भूखा नहीं सोएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे गर्व इस बात का है, कॉन्फिडेंस है कोरोना के अनुभव से कि राजस्थान सरकार कोई काम हाथ में लेगी जिसमें आज वाली इवेंट भी शामिल है, इन्वेस्ट राजस्थान भी, उसमें हम कामयाब होंगे क्योंकि पूरे प्रदेशवासियों को सहयोग मिलता हम लोगों को। हमने तमाम राजनीतिक पार्टियों को साथ लिया कोरोना के अंदर, तमाम धर्मगुरुओं को साथ लिया, तमाम एनजीओ को एक्टिविस्ट के साथ लिया और तमाम जनता से अपील करी कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे खुशी है कुछ माहौल के अंदर भीलवाड़ा मॉडल बन गया हमारा, शानदार फ्री इंतजाम हुए, इलाज हुए, एक व्यक्ति भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा यहाँ पर राजस्थान के अंदर। दवाएं फ्री रखी हम लोगों ने, 40,000 के इंजेक्शन फ्री थे। अब हमने जो स्कीम और आगे बढ़ाई है, पहले फ्री दवाएं थी, फ्री टेस्ट थे, अब हमने जो 10 लाख का बीमा किया है जो देश में कहीं नहीं है। प्रीमियम सरकार भर रही है, कुछ लोगों को छोड़ के, वो 850 रुपये लेते हैं उन लोगों से। पर उसके कारण से जो आज इस स्कीम की शोहरत बढ़ रही है देश के अंदर, 10 लाख का बीमा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है तो अलग से खर्चा उसका सरकार देगी। इसके मायने है कि अगर आप 10 लाख में 4 लाख खर्च आपके हो गए, 6 लाख ही बचे हुए हैं, वो 6 लाख बचे रहेंगे आपके परिवार के। अगर खुदा न कहा तो किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ रही है, लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है, या और कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है, 15-20 लाख रुपये खर्च होते हैं। उस परिवार को 15-20 लाख रुपये सरकार देगी, 6 लाख बचा के देगी, जिससे कि वो डिस्टर्ब नहीं हो और उसके इलाज संभव हो जाए। ऐसी स्कीम संभव कहीं नहीं होगी। इस स्कीम को हमने लागू किया राजस्थान के अंदर। एमआरआई फ्री, सीटी स्कैन फ्री, आईपीडी ओपीडी फ्री सरकारी अस्पतालों के अंदर, और साथ में 5 लाख का बीमा है ऑक्सीजन के नाम से भी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है आप जानते हो कि इस देश में करीब 2.5 लाख लोग मरते हैं पर ईयर ऑक्सीजन से। राजस्थान में करीब 10,000 से ज़्यादा लोग मरते हैं। भगवान करे कोई ऑक्सीजन नहीं हो, पर हो जाते हैं। तो हमने प्रोविजन किया इस स्कीम के अंदर जो 1,35 लाख परिवारों को कवर किया हुआ अभी तक, करीब 80-90% तक हो चुका है करीब। उसके अंदर 5 लाख का बीमा कर दिया है। अभी जब से स्कीम लागू हुई है लगभग 1,000 लोग मारे गए हैं। पानी बढ़ता बहुत भयंकर, उसमें कई लोग डूब जाते हैं। अभी परसों लोग डूब गए थे, 9 लोग। सबके घरों में 5 लाख रुपये पहुँचने लग गए हैं कोई चिरंजीवी हेल्थ योजना पर। और इसके साथ में हम लोगों ने हर परिवार में मुखिया रखा महिला को। महिला सशक्तिकरण के कारण से उन तमाम महिलाओं को, क्योंकि मैंने देखा अभी अनुभव किया कोरोना के अंदर कि ऑफलाइन पढ़ाई हो गरीबों के यहाँ तो वही हुई, क्योंकि उनके पास लैपटॉप नहीं था। ऑनलाइन पढ़ाई कहीं कहीं हुई। तो हमने तय किया 1,35 लाख परिवारों की महिलाओं को सबको स्मार्टफोन सरकार देगी। 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी उसके अंदर। ये हमने फैसला किया। इस प्रकार से एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल राजस्थान में बन चुका है। आने वाले वक्त में जो आप अभी देखेंगे, आज और कल के अंदर लिटरेचर मिला होगा आपको, उसमें आप देखेंगे ऐसे ऐसे फैसले किए हैं कि मैं वक्त नहीं कि मैं उनको जिक्र करूं। आप खुद मानेंगे कि राजस्थान सरकार एग्रेसिव होकर के इंडस्ट्री को, टूरिज्म सेक्टर को, सबको सहयोग कर रही है। और उसी ढंग से हम उम्मीद करते हैं कि इस माहौल बनने के बाद में और ज़्यादा इन्वेस्टर चाहे देश या दुनिया के यहाँ आएंगे। ये हमारी सोच है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं तमाम जो हमारे मेहमान आए हैं
उन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब लोग बिजी रहते हैं बिजनेस के अंदर भी। आप लोग सब आए हैं डेलीगेट बन के, मुझे खुशी है कि आपने यहाँ आना मंजूर किया। एक नई शुरुआत हो रही है और मैं चाहूँगा आप सबके सहयोग से राजस्थान में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आए, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि समस्या भी देश में बेरोजगारी की और महंगाई की बहुत भयंकर है। हम चाहेंगे देश में शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के साथ बना रहे। ऐसे माहौल में ही कोई देश प्रगति करता है, प्रदेश प्रगति करता है या गांव प्रगति करता है। जहाँ शांति नहीं होती है, हिंसा होती है, तनाव होता है, वहाँ विकास रुक जाता है। ये हमारी सरकार की सोच है। इसको हम चाहते हैं कि ये भावना घर घर तक पहुँचे और उस भावना को हम लोग मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके उत्साहवर्धक संदेश के लिए, और सभी को साथ लेकर सद्भावना के भाव से, प्यार के भाव से आगे राजस्थान की उन्नति प्रगति की तरफ जो आपकी सोच है, मंशा है, वो हमारे साथ साझा करने की। देवी सज्जनों, जैसा कि आपने पहले सुना, एज आवर additional chief secretary had mentioned to you that there were various activities, various interactions were there with the industry leaders. So today's summit is actually a milestone event to all these commitments which were made, the discussions which we had. And living up to this very promise of committed and delivered, we are now going to be witnessing a number of launches and inaugurations at the hands of our Honorable Chief Minister, sir. तो सबसे पहले मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वह 33 इंडस्ट्रियल यूनिट्स का शिलान्यास करें और 18 इंडस्ट्रियल यूनिट्स का उद्घाटन करने के लिए। For this, requesting the Honorable Chief Minister, sir, to kindly place the digital seat on the platform, which is on his left-hand side. Additional Chief Secretary, ma'am, to kindly escort him. तो देवी सज्जनों, ये बीज प्रतीक है राजस्थान सरकार की मेहनत और प्रतिबद्धता का, जिसके परिणाम स्वरूप आज 51 इंडस्ट्रियल यूनिट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है।